Ladies and gentlemen, we have relative pronouns, relative adverbs, and relative clauses today. This is a very significant topic because it makes our English grammatically correct. So, when we speak and when we write, so we use pronouns and we use adverbs, and these pronouns and adverbs are parts of speech. Out of the 8 part of speech we have pronoun and adverb. Relative pronouns and relative adverbs, they make our language more communicative, and we have to speak and write in a correct form. So there are 8 parts of speech. Two of the parts of speech are pronouns and adverbs. In pronouns, we have relative pronouns and we have relative adverbs. So today I made a post, and you might have seen that post, on rhizomatic learning and arborescent learning. Can anybody please make it as a comment? Rhizomatic and arborescent learning. Today I made a learning tip. A learning tip. So if you can please share that learning tip regarding rhizomatic learning and arborescent learning. Now, arborescent learning is to understand everything, the whole topic, and then we get confused. Oh, I can't understand. Arborescent learning is good for academic purposes, but not for competitive exams or for some creativity based learning. Rhizomatic learning is that we learn pieces by pieces, bits by bits. Today, you just learn there is a pronoun called a relative pronoun, a relative adverb. Just these two names are enough for you. And tomorrow, you read more about relative pronouns and relative adverbs. So then you connect the dots. Oh, sir was talking yesterday about relative clauses, relative pronouns, relative adverbs. So now I start understanding it. So do not try to understand everything at the same time. You have to understand things pieces by pieces, pieces by pieces, slowly and gradually. You cannot understand relative clause in one day. You just, if you listen to the name a relative clause, so that is enough. Then relative pronoun, then relative adverbs. Now, a relative pronoun is, for example, the words who, that, whom, which. These are relative pronouns. Sometimes we make mistakes while using these pronouns. For example, who, that is used for human beings. Whom is used for human beings, but in the possessive case. In the possessive case. For example, whom do you want to talk? Whom do you want to talk? Who is talking? Whom do you want to talk? So these are two different things. Who do you want to talk? Whom do you want to talk? And who is talking? Who is talking? Whom do you want to talk? Similarly, that person, the person who came here, that is the person who spoke to me about you. So that can be used for both living and non-living, human and non-human things, which is usually used for non-human things, or especially dead or non-living things. For example, what is your father? So what is your father means what your father is doing.
who is your father means that among these people, who is your father? If there are 3-4 persons, which one is your favorite book, for example? So as book is non-human, so we use which. So these are interrogative pronouns, but these are also used relative pronouns. Now when we make a relative clause, so relative clause modifies or changes or adds something to the meaning of a noun or pronoun. Relative, like relationship. What a relationship is, what a person is doing, what is the relationship. For example, this is a very nice person who talked to me last night, and the person is a doctor. So it can be a defining clause or it can be a non-defining clause. For example, I like the student who works hard, and that student must be present in the class. So if I say who works hard, this is a non-defining. I can make a sentence without this also. But sometimes it is defining. I met a person who is my doctor. I met a person who is my doctor. Now, I met a person who is a relative pronoun, who is my doctor is a relative clause, but this is defining. Without this, the meaning is not clear. So we have defining a relative clause and we have non-defining relative clause. Now, relative clauses are mostly used by relative pronouns, but sometimes it is also made by relative adverbs. Relative adverbs. Relative verbs are like when, where. These are relative adverbs. When I went to Karachi, I went to Karachi when my friend was coming from Saudi Arabia. So in this sentence, when is a relative adverb and it is making a relative clause. So when we want to explain something and that explanation is by relative pronoun or relative adverb, so the clause part of the sentence is called a relative clause. Relative clause is a dependent clause. Dependent clause means that it is not complete by itself. For example, who is a doctor? I met a person who is a doctor. Who is a doctor? Now, who is a doctor is not a complete clause. That's why it is dependent clause. Please make a comment that I must know relative clauses, relative pronouns, and relative adverbs so that I can explain further in my communication. So please make a comment that I must understand relative clause, relative pronoun, relative adverb so that I can explain during my communication. Why these relative pronouns and relative adverbs are used? For further explanation. For further explanation. अभी मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा समझाता हूँ कि रिलेटिव क्लासेस जो है ये रिलेशनशिप बताता है, इस वजह से इसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ये रिलेटिव क्लॉज बनते कैसे हैं? रिलेटिव क्लॉज जो है वो बनते हैं प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से और रिलेटिव एडवर्ब से। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है? हु, होम, व्हाट, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव एडवर्ब्स के क्या एग्जाम्पल्स है? व्हेन, वेयर। तो इस तरह के जो अल्फाज है वो रिलेटिव एडवर्ब्स है। हम क्यों रिलेटिव क्लासेस बनाते हैं?
क्योंकि हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं मजीद। मसलन मैं कहता हूँ आई मेट अ पर्सन हु इज़ माई टीचर, तो मैं एक बंदे से मिला, या आई मेट मिस्टर असलम, आई मेट मिस्टर नईम, मैं मिस्टर नईम से मिला। तो कौन है मिस्टर नईम, क्या करता है? तो इसको मज़ीद रिलेटिव रिश्तेदारी बनाने के लिए, ताल्लुक़ बनाना, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई मेट मिस्टर नईम हु इज़ माई टीचर। तो ये जो हु इज़ माई टीचर है, दिस इज़ रिलेटिव क्लॉज। अब ये रिलेटिव क्लॉज कहाँ से बना? हु से बना। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कभी कभी हम कंफ्यूज करते हैं हु और होम को। सो होम इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, इन द पोजेसिव केस। पोजेसिव का मतलब यह है कि होम डू यू वांट टू स्पीक, आप किससे बात करना चाहते हैं? हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? तो कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग। होम डू यू वांट टू स्पीक, आप किससे बात करना चाहते हैं? सो होम और हु एंड हु both are relative pronouns but both have different function. तो हु जो है इंसानों के लिए यूज होता है, होम भी इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन उसका यूज डिफरेंट है। देट इंसानों के लिए भी होता है, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज होता है। विच जो है वो ज़्यादातर गैर इंसानी चीज़ों के लिए यूज होता है। विच मतलब विच इज़ द पर्सन हम नहीं कहते, हम हु इज़ द पर्सन कहते हैं। अब ये जो विच जब क्वेश्चन बनाते हैं, सो देन इट बिकम्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब ये एक्सप्लेन करता है फर्दर, देन इट बिकम्स रिलेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज यू हैव टू सी दैट द सेम प्रोनाउंस कैन यूज डिफरेंट फंक्शंस। अब प्रोनाउन जो है वो सिर्फ ही शी इट नहीं है, हु भी प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन वही हु जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। मतलब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए भी यूज होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो अगर ये नाउन की जगह है तो प्रोनाउन है, ये अगर नाउन को मजीद एक्सप्लेन करता है तो फिर एडजेक्टिव है। सो द मेन पर्पस ऑफ ग्रामर इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स, कि वो किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन जो है वो यूज करता है। सो आई हैव गिवन यू द नोट्स में ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बोले ये मौजूद है, एग्जाम्पल्स भी मौजूद है, डेफिनेशंस भी मौजूद है, रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव क्लॉजेस की दो किस्में हैं, एक किस्म जो है वो डिफाइनिंग है, एक किस्म जो है वो नॉन डिफाइनिंग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम एक वो ज़रूरी है, आई मेट नईम खान हु इज माई टीचर। अब हु इज माई टीचर रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन ये डिफाइनिंग है। मतलब डिफाइनिंग का मतलब ये है कि ये जरूरी है, इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं है। मसलन मैं कहता हूं आई मेट नईम खान अ वेरी नाइस पर्सन हु इज माई टीचर। आई मेट नईम खान अ वेरी नाइस पर्सन हु इज माई टीचर। तो ये कंप्लीट है कि नहीं? आई मेट नईम खान हु इज अ नाइस पर्सन, या नईम खान अ नाइस पर्सन। तो हु इज माई टीचर जो है वो फिर जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नईम खान नाइस पर्सन है, तो ये भी बहुत है समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको ये पता न चले कि वो टीचर भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज वाई दैट इज नॉन डिफाइनिंग। सो क्लॉजेज जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलेटिव क्लॉजेज। डिफाइनिंग जरूरी है, आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो कामों में आप डालते हैं दैट इज नॉन डिफाइनिंग। जो कामों के बगैर होता है दैट इज डिफाइनिंग। सो आफ्टर दिस क्लास when you read the notes it will take you 10 minutes, आपके 10 मिनट लेंगे, लेकिन जब आप नोट्स को अभी पढ़ोगे so then everything will be very much clear to you. So I think that Australia and Pakistan match is going on. I don't know how many of you are interested, but I will go to the other class quickly, and then you can continue your practice. Please safe to में practice किया करें। मैं अगर आपका वो नहीं देखता काम, तो मुझे दोबारा बार बार टैग करें ताकि मुझे आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, सर मैंने फ़लान जगह अपनी लिखाई की है तो वो आपने अभी तक एवेलुएट नहीं किया। कभी फेसबुक में नोटिफिकेशन ज़्यादा हो जाते तो मुझे नज़र नहीं आते, जैसे मुझे नज़र आते हैं मैं आपका काम जो है वो देखता हूँ। तो सेव टू में प्लीज़ लिखा करें, कुछ ना कुछ डेली लिखा करें, अपने डेली प्रोग्राम लिखा करें कि आज आपने क्या किया, सो दैट यू हैव योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली। मैं आपको डेली कहता हूं कि आप करें, लेकिन आप डेली नहीं करते, तो ये गलत है। सेव टू में अपना प्रैक्टिस किया करें और कोई भी चीज़ मुझसे इवैल्यूएट कराएं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नाउ इन LPCS क्लासरूम।